टोटल 60 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं और विद इन 60 मिनट्स आपने ना सिर्फ क्वेश्चंस करने होते हैं लाइक 1 to 40, बल्कि आपको आंसर्स भी ट्रांसफ़र करने होते हैं टू दी आंसर शीट। ये सारे काम करने होते हैं आपको। जब भी आपको रीडिंग पैसेज मिले, रीडिंग पैसेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्विकली उसको देख लेना होता है कि इसके अंदर किस किस्म के क्वेश्चंस हैं, किस किस्म का कंटेंट है। लाइक दिस इज़ हॉलीडे प्लस, इसके ऊपर आप देखें तो देयर आर द 3 हॉलीडे लोकेशन। द फर्स्ट वन इज़ माउंटेन लॉज, सेकंड वन इज़ पेलिकॉन रिजॉर्ट एंड थर्ड वन इज़ सीडर लॉज। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले क्विकली आपने जो क्वेश्चन टाइप्स हैं उनको देख लेना है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर हियर। अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। राइट द करेक्ट लेटर A, B, C इन द बॉक्सेस। आपको हॉलीडे लोकेशन यहाँ लिखनी होती हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में। इसके आगे A आता है, B आता है या C आता है, जो भी इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन 4 to 6 अगेन वी हैव 3 क्वेश्चंस और इन 3 क्वेश्चंस को नो मोर देन 3 वर्ड्स, दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको यहाँ पे कवर करनी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, क्विकली इसको हम करेंगे, कीवर्ड टेक्निक अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जस्ट रीड दिस हॉलीडे डजंट कैटर फॉर यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन मीन अंडर 15 भी हो सकता है, अंडर 20 भी हो सकता है और अंडर 25 भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज प्रिडिक्शन। दिस ऑलरेडी प्रोवाइड्स अ टूर एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये टूर प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी चार्जिंग, विदाउट लाइक चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। दिस ऑलरेडी इन्वॉल्व्स द मोस्ट ट्रैवल टाइम। ये मोस्ट ट्रैवल टाइम जो है आपको चाहिए, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए टूर की। एंड देन वी हैव टू लाइक लुक फॉर द यंग चिल्ड्रन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखना है कि इसमें यंग चिल्ड्रन को इन्होंने कैटर किया है या नहीं किया। वी कैन फाइंड in the holiday location. There's no need to go for price, there's no need to go for number of nights over here. हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं इन कमेंट्स एंड हॉलीडे लोकेशन में आप क्विकली स्कैन करेंगे। एज को स्कैन करना है हमने। दिस इज़ 5 किलोमीटर नॉट एज। दीज आर द फ्री सर्विसेज हियर। पेलिकॉन रिजॉर्ट, यहाँ पे कोई ऐसा जिक्र नहीं आया। For those under 25, this is the word like over 25 इन्होंने यहाँ पे लिखा है, but in the question it was not for young children, so you would be writing C here. Why it is C? Because हमें जो आंसर मिला है वो यहाँ से मिला था, कैरल लॉज में से। Second question is, this holiday provides a tour at no extra cost. No extra cost mean free of cost यहाँ पे होगा। इसको हमने देखना है कमेंट्स के अंदर, आप देख सकते हैं फ्री 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 नो फ्री मिनी बस ट्रिप अराउंड द आइलैंड। ये मिनी बस ट्रिप अराउंड द आइलैंड है, दे आर प्रोवाइडिंग। सो आंसर वुड बी बी। दिस ऑलरेडी इन्वॉल्व्स मोस्ट ट्रैवल टाइम। जस्ट हमको ट्रैवल टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में देखना है। यहाँ पे हम चेक करेंगे। वैसे बाय द वे आपका अगर आप यहाँ देखें C इज़ डन, B इज़ डन, मे बी ये A हो लेकिन कंफर्म नहीं है। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम A में ही देखते हैं। 1 hour 15 minutes, 2 hours, then half an hour, उससे कम है, then 10 minutes, 10 minutes, then half an hour, then 1 hour 15 minutes and 2 hours. So this is the answer. Answer would be A. You would be writing quickly here A. Got it? A, B, C ये तीनों हो गए। Moving on quickly, that is no more than 3 words. These are the blanks जो हमने ढूंढनी है। When will one of the holiday location, when जो है this is the indicator of time, यहाँ पे हमें टाइम ढूंढना है। Then which 2 outdoor facilities are provided at no extra cost at Mountain Lodge? Mountain Lodge में से आपने देखना है कि 2 कौन सी facilities हैं free of cost. What is the fastest way to travel Mountain Lodge? माउंटेन लॉज के अंदर ये हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अगेन माउंटेन लॉज के ऊपर फ्री एक्टिविटीज़ ये भी यहीं पे देखेंगे। देन व्हेन वन ऑफ द हॉलीडे लोकेशन विल नॉट बी क्लोज। कमेंट्स के अंदर जल्दी से हमने देखना है
कि कहाँ पे ये क्लोज नहीं हो रहा. It can be months, it can be day, it can be year. Resort will close for May. So answer is May. You can write here the word May. Keep in mind it is no more than 3 words. उससे ज़्यादा words हमारे पास नहीं होने चाहिए. Which 2 outdoor activities are provided no extra cost? Comments के अंदर देखेंगे Mountain Lodge में. Mountain Lodge comments में हमारे पास हैं free canoeing, free talks in the evening, outdoor activities, not indoor. Then free open air tennis court. You can use the word tennis and you can use the word canoeing. Canoeing and tennis, these are the 2 words जो हमें लिखने हैं और according to the passage हमें यहाँ पे spellings लिखने हैं. जब भी आप spellings लिखें तो आपको spellings वहाँ से देख के लिखने चाहिए. Like it is canoeing, CANOEING, and tennis. Next question is, what is the fastest way to travel to Mountain Lodge? Mountain Lodge के ऊपर आपको fastest way कौन सा traveling का बस जो है that is taken 2 hours और self drive auto it is taken 1 hour 15 minutes. तो हम यहाँ पे auto भी लिख सकते हैं. We can also write self drive auto. So here we would be writing self drive auto. Why? Because we can write up to 3 words, no more than 3 words. We can write here. उसके बाद this is the end of your reading passage. Like section 1 का जो आपका part था, question 1 to question 6, it is over. Now moving on to next part, that is your question number 7 to 14. सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं. Classify the following events as being it is covered by the government, it is covered by the multi-plan policy, not covered by the multi-plan policy, and covered in some situations. It is, you can say, 50-50. This is for government and this is for multi-plan policy, not for multi-plan policy. What is the passage about? The passage is about Sydney Travel College. At this college, we recommend the multi-plan policy. Travel insurance requirements, medical, belongings, cancellation. So your questions would be like question number 1 to 7. They would be regarding medical. It can be about belongings. It can be about cancellation. अब ये जो questions हैं, if we go for the prediction, आपके जो mostly questions हैं, it would be in a sequence. एक ही sequence में यहाँ पे questions चलेंगे और आपको क्या करना है कि सबसे पहले you have to look at the question number 1. A student traveling overseas suddenly needs hospital treatment. Suddenly needs mean it can be emergency, it can be accident, like this. So the question is about hospital treatment, so it is about medical. हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं total insurance requirements, but the question is about medical, so we would be quickly starting from here. Australia has reciprocal medical arrangements with governments of the 8 nations you will be visiting. This arrangement will cover all emergency hospital treatments, so this is going to covered by the government, right? So we would be writing covered by the government. It is A here, right? Quickly move on. Question number 2. A student consults a doctor regarding minor problem while abroad. If a student is abroad, so he is going to consult a doctor. This is not an emergency problem. Now it is going to be covered by, like your doctor visits are being covered by. ये हमको ढूंढना है. However, students will have to take out insurance such as multi-plan cover to cover the cost of all the visits to doctor. All the visits to doctors covered by the multi-plan, not emergency medical situations. So it is going to be B here.
just write B. Then next question is, a parent goes overseas to bring an injured or sick student to Australia. आपके घर से कोई पेरेंट्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और स्टूडेंट वहाँ पे बीमार है, इंजर्ड है, उसको वापस घर लाने के लिए, अब कौन पे करेगा? If you have a serious accident or illness, multi-plan insurance will cover the cost of your flight back to Australia, if required. If means there's a condition. Depending on the circumstances, this may also pay for either medical personnel or family member. या तो मेडिकल पर्सन जो इंजर्ड है वो लेगा, या फिर लेगा जो फैमिली मेम्बर है वो लेगा. यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, इफ़ कंडीशन लगा दी है. It is 50-50. Your question number 9 answer would be delta. Why is delta? Covered in some situations. यहाँ पे some situations में cover किया जाएगा. Then question number 10. A student is treated overseas for an illness he/she had before leaving Australia. ऑस्ट्रेलिया लीव करने से पहले से उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम था तो उसको कौन कवर करेगा? यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. मल्टी प्लान इंश्योरेंस में नॉट कवर ऑल प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस. दे आर नॉट गोइंग टू कवर. सो बिफोर यू लीव बी श्योर टू चेक विद देम अबाउट एनी लॉन्ग टर्म इलनेस और disabilities that you have. So this is not going to be covered by multi-plan. May not cover. Again, like this is a condition. All pre-existing, they can cover, they cannot cover. The word is may not cover. What was the question? A student treated overseas for an illness he/she had before leaving Australia. So this is again delta. Next question is question number 11. A student who requires medical treatment has lost his/her travel insurance card. This is about belongings. Travel insurance card को if he is not having, तो वो medical treatment उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? You have to scan for the card starting from here. If you require a medical treatment overseas, and you want to make a claim on your insurance, the claim will not be accepted unless you produce both your student card and your travel insurance card. You must have your travel insurance card. If you are not having travel insurance card, you will not be treated. So it is not going to be covered by multi-plan policy. It would be C here. Number 12, student study books are lost. If you are losing the books, who is responsible? We have to find it from the belongings. Books, copies, notes, handouts. These are the words we can scan. Study books. This cover any loss or theft of your everyday belongings. So it is going to be covered by, I think, multi-plan policy. Students study books are lost. It would be covered by multi-plan policy. B. A student's laptop is stolen. If laptop, there can be the word computer because they use the synonyms. If you lose the computer, then portable computers, if you specially list them as items in the policy. Whenever there is a word if, it's mean it's a condition, 50-50 condition. So over here, again, the answer would be delta. If you provide, if is a condition. A student changes her mind about plans to study and decides not to take booked flight.